Good afternoon, everyone. I welcome you all to this post-lunch session of Faculty Development Program. We have now moved on to the 14th session of Faculty Development Program, and in this session, we have two topics which will be covered. The first topic for this session is academic integrity and professional ethics. This session will be delivered by Dr. Amit Dashura, and in the second session, we have mentoring and personal development of students, the role of faculty, which will be delivered by Professor Dr. Amit Sareen from IK Gujarat Punjab Technical University. So, to start with the first session, we have our esteemed speaker with us, Dr. Amit Dashura ji. Welcome, Dr. Amit Dashura ji. Dr. Amit Dashura, he is National Co-Convener of Bharatiya Shikshan Sansthan. He has served in various responsibilities at all India level, uh, and he has worked as a co-principal in an educational cell for 12 years. He has done his PhD in human resource management. He has worked as an assistant professor at Janardhan Rai Nagar Rajasthan Vidyapeeth University. He has also worked as assistant professor at Maharaja Agarsen University in Himachal Pradesh. He has worked in ICSSR from 2017 to 2019. He is presently working as an academic consultant in IGNOU. He has presented several research papers in national and international seminars. He has got several research papers published to his credit. More than he has given more than 50 keynote lectures in various universities as expert. Sir, we are honored to have you on this platform. It's our privilege to have such a personality with us, and we are really thankful to you, sir, for being with us and for accepting our invitation. And in this session, the we are covering about human values and professional ethics from morning onwards, and I think your session will add value to this theme. Welcome, sir. Over to you, Dr. Amit Dashura. Thank you, sir. Yes, sir. I You am are welcome, very sir. thankful for Om Sterling University for organizing this wonderful session. And this session is not only useful for the students and faculties of Om Sterling University, but this session is very much important for the faculties of all over India. As you are putting these lectures on YouTube, so I think all the faculties, whosoever is interested in this sort of topics, can participate in this seminar. So I'm very thankful to the Vice Chancellor of Om Sterling University, Pro Vice Chancellor of the Om Sterling University, and other faculty members for organizing this wonderful session. The topic of academic ethics is very much vast. And as far as the term ethics is concerned, this is not just related with do's and don'ts. It has a lot of scientific connotations. The thing which is not scientific cannot be ethical also. If there is a situation that something is ethical but not scientific, then that cannot be called rational, that cannot be called logical, and that is just pop up the foundations on rationality. As far as Indianness is concerned or Bharatiyata is concerned,
it emphasizes on proper rationality, logically, emotionally, intellectually, spiritually. The base of Bhartiyata as well as the ultimate aim of Bhartiyata is liberation. So rationality should liberate. Now I'm going to discuss about very special concept which is given in Nyaya philosophy. That is the concept of apt. Apt means reliable person. Reliable person. Who can be the reliable person? And what is the importance of reliable person in academics? So we all are related with research. We all are doing our intellectual works related with evidence and proof, with rationality. And when we see the condition of research, when we see the quantity of research, when we see the quality of research, when we see the efforts all the academicians are making into the research, when we see financial expenses on research, a lot of research work is going on in all over the world. Many academicians are doing work day and night. They are doing really hard work. Many organizations are paying a lot of money to do the research. But when we see the condition of research and when we see the situations in society, we don't find or we don't observe any positive correlation in quality and quantity of research and conditions in society. The objective of research is liberating from dukha. रिसर्च करते क्यों हैं? ताकि दुखों से मुक्ति मिल सके. किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो उसको हम रिसर्च करके उसको सॉल्व करते हैं. हजारों पीएचडी हर साल होती है. हजारों प्रोजेक्ट हर साल होते हैं. हर सब्जेक्ट में बहुत सारी रिसर्च देखते हैं. When we look into the research in management area, a lot of research work has been done in field of motivation, in field of morale, and so many areas. But when we see the impact of research, even today, motivation is the problem, morale is the problem. In same manner, if we see the quality and quantity of research in economics, a lot of research work has been done in the area of economics, but still poverty is major problem.
when we see the quality and quantity of research in political science, a lot of research has been done, so many problems has been solved academically, but we can see the situation of politics and political environment. When we see the research in sociology, quality and quantity of research, a huge research work has been done in last many years, but basic unit of society, that is family, that research work is not able to maintain that basic unit of society, that is family. तो रिसर्च जितना हो रहा है, क्या उसके अकॉर्डिंग हम उसका पॉजिटिव कोरिलेशन सोसाइटी में देखते हैं? और पॉजिटिव कोरिलेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ रिसर्च एंड कंडीशन इन सोसाइटी, देयर मस्ट बी पॉजिटिव कोरिलेशन. एक तरफ तो बहुत रिसर्च हुआ जा रहा है, हुआ जा रहा है, और दूसरी तरफ हम सोसाइटी की हालत देखते हैं तो वहां हमें बिल्कुल अपोजिट सिचुएशन देखने को मिलती है, इवन इन एवरी एरिया ऑफ सोशल साइंसेज. तो कहीं तो हमें देखना पड़ेगा, कहीं तो कुछ गड़बड़ हो रही. आखिर कहां बेसिक मिस्टेक हुई? तो उस मिस्टेक को समझते हुए, उस बात को समझते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा. जैसा कि मैं अभी कॉन्सेप्ट की बात कर रहा था, आप्ट का कॉन्सेप्ट. आप्ट क्या होता है? हु इज रिलायबल पर्सन, हु इज रिलायबल एकेडमिशियन. हर एक छपी हुई चीज सत्य हो जरूरी नहीं है. वॉट एवर इज रिटन in the name of research paper, it is not compulsory that that is true. Deliberation खत्म हो गया, डिबेट खत्म हो गया है. लिखना छपाना, लिखना छपाना, लिखना छपाना. और दिक्कत यह है कि जो छपा हुआ है उसको सत्य मान के आगे की रिसर्च में यूज किया जाता है. आगे की रिसर्च में वो रेफरेंसेस का काम करते हैं. तो क्या हर लिखी हुई चीज, हर छपी हुई चीज, हर जर्नल के पता नहीं कुछ भी कुछ किसी क्राइटेरिया को देखते हुए क्या लिखा हुआ ठीक है? उस पर प्रॉपर डिबेट हुआ है? लेकिन उसको रेफरेंस मान के आगे यूज करते हैं, आगे फिर आगे यूज करते हैं, आगे फिर आगे यूज करते हैं, और बहुत सारा झूठ सत्य बन के हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है. इसलिए हमें सोसाइटी में ये सिचुएशन देखने को मिलती है. तो रिलायबल पर्सन कौन होगा? किसकी कही हुई बात, किसकी लिखी हुई बात, किसकी ओपिनियन को एक्सपर्ट ओपिनियन माना जाएगा? किसकी कही हुई बात को समझा जाएगा कि ये बात जो कही हुई है ये ठीक है? न्याय फिलोसफी हैज given the criteria that whose word can be used as evidence and proof. किसके शब्दों को प्रमाण माना जा सकता है, किसकी रिसर्च को प्रमाण माना जा सकता है. तो एकेडमिशियन कौन होना चाहिए? एकेडमिशियन शुड बी apt. Academician should be reliable person. And who is apt? What are the characteristics of apt? Whose words can be used as verbal testimony? So first condition, that apt must be free from all prejudice. जिसने लिखा है, जिसका रिसर्च है, he should be free from all prejudice.
दूसरी कंडीशन, हैज नो सेल्फ इंटरेस्ट इन आउटकम ऑफ इंस्ट्रक्शन। जिसने लिखा है, जिसकी बात को हम रेफरेंस के तौर पे यूज कर रहे हैं, he should not have any self interest in outcome of instruction। जैसा है वैसा उसने लिखा है, उसका अपना कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं। थर्ड कंडीशन, is recognized by other authorities as trustworthy। जो सब्जेक्ट की दूसरी अथॉरिटीज हैं वो भी उसे ट्रस्टवर्दी मानती हों, और वो ट्रस्टवर्दी कब मानेंगी? जब उनके साथ डिबेट हुआ है, डिस्कशन हुआ है, और उस डिस्कशन में, उस डिबेट में वो कॉन्सेप्ट जीता है। चुपचाप कमरे में बैठ के लिख देना और छपा देना, दैट इज नॉट इनफ। चीजों को बाहर लाना पड़ेगा, डिस्कशन में लाना पड़ेगा, डिबेट में लाना पड़ेगा, उसके बाद उसको और प्यूरिफाई करके लिखना पड़ेगा। फोर्थ क्वालिटी, द पर्सन मस्ट एक्सप्लेन द ऑब्जेक्ट एज ही हैज एक्सपीरियंस्ड और परसीव्ड। किसी ने क्या कहा है, किसी ने क्या कहा है, सब चीजें ठीक है, लेकिन वो खुद क्या देख रहा है, वो खुद क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, उसने वो लिखा। नेक्स्ट क्वालिटी, द पर्सन शुड बी मर्सीलेस while telling the truth for research purpose। रिसर्च में दया नहीं चलेगी। जैसा सत्य है, किसको बुरा लगेगा, किसको अच्छा लगेगा, उसकी परवाह करते बिना जो रिसर्च की फाइंडिंग है वो मर्सीलेसली बता सकते। क्योंकि रिसर्च, आज की रिसर्च को आने वाले फ्यूचर जनरेशन एज ए रेफरेंस यूज करेगी, और अगर आज सत्य नहीं बोला गया तो न जाने आने वाली कितनी पीढ़ियों का सत्यानाश होगा, और ऐसा हम देख रहे हैं। एंड द लास्ट क्वालिटी, द पर्सन शुड बी मोटिवेटेड फॉर गिविंग फेम एंड एक्सपेंशन टू द पर्टिकुलर एरिया ऑफ नॉलेज। खुद की फेम के लिए नहीं, खुद के एक्सपेंशन के लिए नहीं, उस सब्जेक्ट एरिया के एक्सपेंशन के लिए जो काम करे। शिक्षा नीति हम सभी ने देखी है, हम सभी ने पढ़ी है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रही है, जिस पर्पस के साथ आगे बढ़ रही है, पहली बार भारत के इतिहास में पहली बार पॉलिसी डॉक्यूमेंट ये कह रहा है कि भारत विश्व गुरु बनेगा, और उसके इंग्लिश वर्जन में भी विश्व गुरु टर्म यूज हुआ है। और विश्व गुरु कैसे बनेगा? जब तक आप तो तैयार नहीं होंगे, जब तक रिलायबल पर्सन तैयार नहीं होंगे, जब तक रिलायबल एकेडमिशियंस तैयार नहीं होंगे। विश्व गुरु का मतलब है दुनिया भर से लोग हमारे पास पढ़ने आए। विश्व विजेता बनने की बात नहीं कर रहे हैं, विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज द लैंड ऑफ नॉलेज। तो देश को विश्व गुरु बनाने के लिए हमें आप्त बनना पड़ेगा। हमें हमारे सेल्फ इंटरेस्ट को छोड़ते हुए, हमें नॉलेज के एरिया को एक्सपांड करते हुए, हमें नॉलेज के एरिया में सत्य को बोलते हुए, सत्य की बात करते हुए चीजों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। प्योर रिसर्च करना पड़ेगा, आप्त बनना पड़ेगा। दूसरा,
हमें विवेक को जागृत करना पड़ता। देयर इज नो इक्विवेलेंट टर्म फॉर विवेक इन इंग्लिश. Vivek is Vivek. Sometimes it is translated as discriminative intelligence. Vivek is the faculty of buddhi, intellect. And truth can only be identified by using Vivek. सब में विवेक होता है, पर विवेक को जागृत करना पड़ता। आदि गुरु शंकराचार्य ने बहुत सुंदर किताब लिखी है, विवेक चूड़ामणि। और विवेक की उसमें बात की। शुरू की चैप्टर्स में ही आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि न जाने कितनी योनियां जीने के बाद एक मनुष्य योनि मिलती है। 84 लाख योनियों की बात होती है, तो न जाने कितने हजार सालों तक हम अलग अलग योनियों में भटके होंगे, कितने सारे एक्सपीरियंस हमने लिए होंगे। और न जाने कितनी बार हम मनुष्य बने होंगे। हजारों योनियों में 84 लाख योनियों से गुजरने के बाद मनुष्य बनते हैं, और न जाने कितनी बार मनुष्य बन के हमने एक्सपीरियंस लिए होंगे, तब कहीं जाके हम नॉलेज के एरिया की तरफ बढ़ते हैं, नॉलेज के एरिया में काम करने का सोचते हैं। नॉलेज के एरिया में काम करने के बाद न जाने कितने सालों बाद हम सत्य की खोज के लिए, रिसर्च के लिए आगे बढ़ते हैं, और उसमें भी न जाने कितने जन्म बिताने के बाद विवेक जागृत होता है, और उसके बाद बहुत एफर्ट्स करने के बाद सत्य की ओर बढ़ते हैं, सत्य की खोज के लिए बढ़ते हैं, रिसर्च के लिए बढ़ते हैं। तो एकेडमिशियन सिर्फ एकेडमिशियन नहीं है, उनके पीछे उनके खुद के किए हुए न जाने कितने जन्मों का के एक्सपीरियंस है, न जाने कितने जन्मों की रिसर्च है, न जाने कितने जन्मों के हार्डवर्क हैं, न जाने कितने जन्मों के संस्कार हैं, तब वो आज एकेडमिक फील्ड में, रिसर्च के फील्ड में काम कर रहे हैं। वो इंट्यूशन आता है, वो एक्सपर्टीज आती है, और वो एक्सपर्टीज हर किसी में नहीं आती। माइंड का वो डायमेंशन हर किसी के पास नहीं हो पाता। और जब वो लोग भारत को ध्यान में रखते हुए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए काम करते हुए, अपने विवेक को प्रयोग में लाते हुए काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे, तो इस ज्ञान की भूमि में क्यों सारी दुनिया से लोग पढ़ने नहीं आएंगे। और विवेक का भी फिर जो डिवीजन हुआ है, कुछ 4-5 तरीकों में हुआ है। नित्यानित्य विवेक, द्वैत्वाद्वैत विवेक, आत्मानात्मा विवेक, पंचकोशा विवेक और महावाक्य विवेक। This is not just ethically important, but this is scientifically important for all academicians to work upon these all types of vivek. First is Nityanitya Vivek, what is temporary and what is permanent. We face many hurdles, we face many problems in day-to-day life, but these are temporary problems. After 2 days or 3 days, that problems has no
relation with life. They just come and go. कभी कभी किसी बात को लेके दिमाग खराब हो जाता है, शाम तक ठीक हो जाता है। कभी किसी चीज का क्रेडिट नहीं मिला तो 2 दिन दिमाग खराब रहता है, अगले दिन ठीक हो जाता है। तो दैट इज टेम्परेरी थिंग्स। तो टेम्परेरी थिंग्स में फंसना एकेडमिशियंस का काम नहीं है, क्योंकि एकेडमिशियन जो काम कर रहा है वो परमानेंट सॉल्यूशंस के लिए काम कर रहा है। सोसाइटी में आ रही प्रॉब्लम्स को परमानेंटली कैसे सॉल्व किया जाए उसके लिए काम कर रहा है। आज जो लिखा जाएगा वो न जाने कितने हजार सालों तक काम आएगा, उसके लिए काम कर रहा है। दैट इज नित्यानित्य विवेक। क्या टेम्परेरी है, क्या परमानेंट है, उसमें डिस्क्रिमिनेशन करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। तो एकेडमिशियन को ज्यादातर वो काम करने हैं जिनका की परमानेंट इंपैक्ट, टेम्परेरी सिचुएशंस में ज्यादा नहीं फंसना। स्टूडेंट्स को तैयार करेंगे, रिसर्चर्स को तैयार करेंगे, अपनी खुद की अच्छी रिसर्च करेंगे। दीज आर परमानेंट थिंग्स, दीज आर नॉट टेम्परेरी थिंग्स। सेकेंड इज द्वैता द्वैत विवेक, ड्यूअल एंड नॉन ड्यूअल। When we become one with our work, that situation is the situation of complete rest actually. कर्मयोग कहता है कि एक्सट्रीम वर्क इज रिलेटेड विद एक्सट्रीम रेस्ट। जब तक हम अपने को और अपने काम को अलग समझते हैं, जब तक द्वैत है, जब तक हम अपने को और अपने स्टूडेंट्स को अलग समझते हैं, जब तक हम अपने आप को और अपने यूनिवर्सिटी को अलग समझते हैं, जब तक हम अपने आप को और अपने देश को अलग समझते हैं, तो हम पूरा काम नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस करते होंगे कभी कि जो सब्जेक्ट बहुत पसंद है उनको, और उस सब्जेक्ट की उन्होंने बहुत स्टडी करी है, उस सब्जेक्ट का जब वो एग्जाम देने जाते हैं सब भूल जाते हैं, खुद का भी ध्यान नहीं रहता, वो और वो सब्जेक्ट दोनों एक ही हो जाते हैं, और वो उस पेपर को लिखते हैं, पूरी तरह से डूब के काम करते हैं। और उसके बाद जब उनसे पूछते हैं कि कैसा फील हो रहा है, तो बिल्कुल रिलैक्स्ड। 3 घंटे वो पूरी तरह से उस काम में डूब के उसने काम किया है, और उससे पूछो कि कैसा फील हो रहा है, तो रिलैक्स फील कर रहा हूं। बट नो, दे आर डूइंग एक्सट्रीम वर्क, अपने आप को पूरी तरह झोंक के काम कर रहे हैं। बट व्हाट दे आर फीलिंग एक्सट्रीम रेस्ट। तो सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम वर्क इज इक्वल टू सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम रेस्ट। और अगर काम करने के बाद थकान महसूस होती है, जिसने पढ़ाई ठीक से नहीं की हो, एग्जाम में इधर उधर झांक के काम कर रहा हो, जब एग्जाम वो दे के आता है, अरे दिमाग, कोई भी काम। तो दिस इज इथिकली इंपॉर्टेंट। Doing our work with full of our mind and full of our heart, and that work will not give tiredness, that work will give mental peace, that work will give the tranquility of mind. तो एक हो जाना है। जब क्लास लेते हैं, जब हम सब भूल जाते हैं, सब्जेक्ट है, स्टूडेंट है, हम पूरी तरह से खो गए, पूरा सोल हमने अपनी आत्मा उसके अंदर डाल दी, थकान महसूस नहीं होती। बाकी धक्के देने पड़ते हैं कई बार फैकल्टीज को कि क्लास में चले जाओ, क्लास में चले जाओ, 5 मिनट में जाते हैं। और कई बार क्लास लेते लेते खो जाते हैं, बाहर फैकल्टीज अगली क्लास वाले आके खड़ी हो जाती हैं, कह रहे सर अब तो छोड़ दो अरे टाइम हो गया क्या। वही सिचुएशन रिसर्च के लिए। तो अद्वैत में
रहना है, द्वैत करके नहीं रहना है, एक हो जाना है, विश्वविद्यालय के साथ एक हो जाना है, स्टूडेंट्स के साथ एक हो जाना है। तीसरा, आत्मा न आत्मा विवेक। वी मस्ट बी एबल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। हमारे लिए ज्यादा जरूरी क्या है? जीवन ज्यादा जरूरी है या नॉन लिविंग थिंग? हमारे सामने जो बैठा है, स्टूडेंट जो बैठा है, उसकी लाइफ की ग्रोथ हमें ज्यादा खुशी देगी या हमने क्या सामान खरीदा या क्या सामान हमारा टूट गया, बिखर गया, उसका दुख या खुशी हमें ज्यादा खुशी देगी? खुशी दोनों में होगी, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? विद्यार्थी की ग्रोथ या नॉन लिविंग थिंग्स में अपने आप को सुपीरियर बनाने की कोशिश करना। जिसका विद्यार्थी ज्यादा अच्छा होगा वो टीचर ज्यादा अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ता बाकी चीज। तो वो विवेक हमारे अंदर आया है कि नहीं? उसके बाद पंचकोश विवेक। 5 कोश में हमारी पर्सनैलिटी होती है: अन्नमय कोश, प्राणमय, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। बॉडी, हमारा माइंड, हमारी एनर्जी, प्राण, इन सब में ग्रोथ होना चाहिए। तो ये जो कुछ चीजें हैं, आप तो बनना है, विवेक लेकर आना है, उस विवेक के साथ काम करना है, सत्य के लिए हमारी दृष्टि हमेशा। काम नहीं करेंगे तो कौन काम करेगा? रिसर्च का ऑब्जेक्टिव ही ट्रूथ फाइंडिंग। और जब अष्टावक्र संहिता की बात करूं तो ऋषि अष्टावक्र हैज गिवन 3 qualities. First is contented or satisfied mind. The person who is involved in research area, who is involved in knowledge area, he should have contented or satisfied mind. Second, he should be purified and unattached, because attachment makes you prejudiced, biased, and biasness is the enemy of truth, enemy of knowledge, enemy of rationality. Excuse me, doctor. I think your video has paused and we are unable to see your face. Hello. Yeah, we Am can I? hear you, but your video has paused. I mean, No, video is working from my side. yeah, but from this side only your picture is there. That's yeah. Now it's fine. Okay. Now, Okay. yeah. Thank you. Thank you. And third quality, he should be, or he should enjoy being alone. Means he should be contemplative. जो नॉलेज के एरिया में काम करने वाले लोग होते हैं, भगवत गीता में कहते हैं ना कि जो भीड़ में भी अकेला हो सके, योगी की क्वालिटीज बताते हैं। बहुत सारी भीड़ है तो भी वो कंटेम्पलेशन कर सकता है। So contented mind, first quality is contented mind, means satisfied mind. It is free from selfish motives.
and desires. The degree to which an individual perceives his wants to be met is called contentment. The state of contentment can be achieved by understanding through experience and knowledge. And knowledge is the goal of mankind. स्वामी विवेकानंद कहते हैं हम अल्टीमेटली क्या गेन करते हैं, हम नॉलेज ही गेन करते हैं. हमारे जैसे भी एक्सपीरियंस हो, अच्छे एक्सपीरियंस हो, बुरे एक्सपीरियंस हो, हम चाहे जो बने हो, चाहे जो ना बन पाए हो, अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास नॉलेज बचता है. हर प्लेजर, हर पेन हमें नॉलेज देता है. तो नॉलेज इज द गोल ऑफ एवरी सेंसरी प्लेजर एंड पेन. कोई भी प्लेजर होता है, कोई भी पेन होता है, उसका अल्टीमेट गोल हमें नॉलेज देना है. और एकेडमिशियन क्या कर रहा है, नॉलेज दे रहा है. कंटेनमेंट मीन्स फ्रीडम ऑफ self determination within the context of a chosen world view. और रिसर्चर मतलब सबका जो गोल है नॉलेज लेना, नॉलेज लेना, नॉलेज लेना, और एकेडमिशियन नॉलेज देने का काम कर रहे हैं. जो सबको चाहिए वो चीज जब एकेडमिशियन दे रहे हैं तो कंटेंटेड क्यों नहीं रहेंगे, सेटिस्फाइड क्यों नहीं रहेंगे. एक अजीब सा सेटिस्फेक्शन एकेडमिक्स में मिलता है, because they are opening new areas of knowledge, because they realize that knowledge is the goal of mankind, goal of every creature even. और जो रिसर्चर है वो सबको उनका गोल दे रहा है, सबको नॉलेज दे रहा है, सत्य दे रहा है. Then purified mind and unattached mind. अटैचमेंट बायसनेस क्रिएट करेगा, और प्यूरिफाइड माइंड के लिए जब योग सूत्र की हम बात करें, यम नियम की बात करें, तो 5 चीजें आती हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य. वर्किंग फॉर ट्रूथ, नॉन वायलेंस, बहुत ज्यादा इकट्ठा नहीं करना, चोरी नहीं करना, इसमें इंटेलेक्चुअल चोरी भी शामिल है. एंड ब्रह्म मीन्स नॉलेज, एंड ब्रह्मचर्य मीन्स doing work to gain knowledge and avoiding all those work who are enemy of knowledge. That is brahmacharya. So these 5 qualities, these 5 yam gives purified mind. And there is impact of mind when we see the Hawthorne experiments or placebo effect or Pygmalion effect. Hawthorne experiment में हम सभी ने देखा ही है कि people in studies change their behavior because they are watched. जिन्हें वॉचिंग देख रहे हैं, जिनको हम, वो अपना बिहेवियर चेंज कर लेते. जब प्लेसिबो इफेक्ट की बात करें तो उसमें तो मेडिकल का कि कोई भी डिवाइस और एनी मेडिकल इंटरवेंशन रिजल्ट इन पॉजिटिव आउटकम. ये बहुत अजीब है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन हम जब मशीन के साथ है तो मशीन हो सकता है ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ दिखा दे. तो ये इम्पैक्ट है माइंड का मशीन के ऊपर. पैग्मेलिशन इफेक्ट में हायर एक्सपीरियंस लीड टू हायर रिजल्ट, हायर एक्सपेक्टेशन, सॉरी.
गोलेमन इफेक्ट की बात करें, द पीपल इंटरनलाइज नेगेटिव लेबल्स एंड फेल। जो ही हमने नेगेटिव लेबलिंग शुरू कर दी, फेलियर हो जाता है। इम्पैक्ट ऑन माइंड व्हेन माइंड इज नॉट प्यूरिफाइड। हेजनबर्ग इफेक्ट की बात करें तो उसका रिजल्ट कहता है, very act of measurement or observation directly alters the phenomena under investigation। फिजिक्स का है, फिजिक्स में जो पार्टिकल्स हैं वो अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं जब उन्हें देखा जा रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है जो डायरेक्ट माइंड का इफेक्ट मैटर के ऊपर दिखाते हैं, केवल सोच का इफेक्ट दिखाते हैं, केवल उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उन्होंने अपना बिहेवियर चेंज कर लिया। तो माइंड इतना पावरफुल है, माइंड का इतना इफेक्ट है, तो माइंड को प्यूरिफाई नहीं रखेंगे, माइंड को अगर अनअटैच नहीं रखेंगे, माइंड की अगर प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होगी, तो उसका इफेक्ट नॉन लिविंग थिंग्स पे भी आ सकता है। और जो तीसरी क्वालिटी अष्टावक्र बात करते हैं एकेडमिशियंस के लिए, दैट इज एंजॉय बीइंग अलोन और एंजॉयिंग सॉलिट्यूड। अकेलापन भी उतना ही पसंद होना चाहिए, क्योंकि उसमें दिमाग चलता है, उसमें कंटेम्पलेशन चलता है, उसमें थॉट्स चलते हैं, उसमें राइटिंग्स होती हैं, उसमें आइडियाज आते हैं। माइंड स्टॉर्मिंग तो हम बहुत लोगों के साथ करते हैं, लेकिन माइंड स्टिलिंग करने की कैपेसिटी भी हमारी होनी चाहिए। क्या हम हमारे माइंड को स्टिल कर सकते हैं? क्या किसी आइडिया के पीछे पड़ सकते हैं? हो सकता है कि जो करते हुए दिखता हो, टेम्परेरीली उसी काम को वैल्यू दी जाती हो, लेकिन माइंड के अंदर जो काम हो रहा है वो शुरू में नहीं दिखता, लेकिन जब वो प्रकट होकर सामने आता है तो वो बहुत आगे बढ़ता है। इसलिए जो सॉलिट्यूड है, दैट सॉलिट्यूड इज कैरेक्टराइज्ड बाय इनर पीस, एनोनिमिटी, सेल्फ डिस्कवरी, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, spirituality। And if a person enjoys solitude, then he will be able to take maximum advantage of his or her or his mind। और इजी नहीं है, कई लोग 10 मिनट अकेले नहीं बैठ पाते, लेकिन एकेडमिशियंस को ट्रेन होना पड़ेगा, इथिकली ट्रेन होना पड़ेगा कि वो आइडियाज पे चिंतन कर सके, विचार कर सके, अकेले बैठ सके। और यूनिवर्सिटीज को भी थोड़ा सा टाइम देना चाहिए कि वो अकेले बैठ के कुछ सोच सके, विचार सके। एनीवे, so research is truth finding and is not the task of ordinary mind। Research needs an extraordinary mind, extraordinary kind of intelligence, जैसा कि मैंने विवेक की बात की, contentedness, purified mind and enjoying solitude create the situation, create the ecosystem for awakening the Vivek। So I think my time is over। और जो मैंने कुछ मुझे लगता था वो बातें मैंने आप सभी के सामने रखने की कोशिश की है। कुछ 9 क्वालिटीज और हैं जो आदि गुरु शंकराचार्य ने बात की, उसको बताते हुए मैं
आज का लेक्चर खत्म करूंगा. So that is after Vivek there is Vairagya. Vairagya means छोड़ के चले जाना नहीं. That is unbiasedness. This is detachment. That is dispersion. Uh, Excuse me, sir. Samadhi. Your screen has again paused. Yeah. Now is it right? No, still the Hello. same, sir. Yeah, it's still the same, sir. Still the same. Yeah. Now? Now is it okay? Yeah, now it's okay. Okay, 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 okay. Sometimes it sometimes it gets paused. Okay. Is it okay right now? Now, next thing is Sama means serenity or tranquility. Next is Dhamma means control on senses. Then Uparthi. Uparthi means abstaining on principles. Then Titiksha, that is power of endurance or forbearance. Then Shraddha, that is faith, faith in knowledge, faith in our concept, faith in truth. Then Samadhan means mental balance by attention or perfect concentration, or we can say one pointedness. And this all will give liberation through the path of knowledge. Thank you very much. Thank you so much, sir. It was really a wonderful session. It was, and I would like to introduce Dr. Ajay Podar, sir, who has also joined us in this session. Uh, Over to you, sir. Mm, Thank you, Dr. Mukeshji, and Dr. Amit Dasora is there, and I am very very happy to him for a full session out here, and the way he has spoken and the way he has given the certain knowledge and skills that what the teacher should have. It's a remarkable, and I believe that our faculty and the faculty across the country they have benefited a lot, and very simplicity how faculty should have they should go with the research work. He has mentioned that, and he has narrated that the research should not be alone that we wanted to please somebody, but it has to be in the same way what the result is actually came. So with that, I believe that the faculty have understand their responsibility and answerability. As in the last session also, when the Vice Chancellor of OSU was talking, I said that yes, the teachers should have their understanding that they are basically the nation builder, and they need to take care the society. They need to take care the ethics, values, and what we have to give to our generation second. So with that, नमस्कार एंड धन्यवाद डॉक्टर अमित दसोरा जी. आपने जो सेशन लिया है एक तरह से लोग लंच करके आए थे दोबारा से ओतप्रोत हुए. ओजस्वी भाषण था, ओजस्वी लेक्चर था. धन्यवाद आपका. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you for your enlightening speech. And now we are moving on to the next esteemed speaker, um, Dr. Sarin. I think you can put on your camera now. Uh, yeah, thank you, sir. Thank you so much for joining this session. And dear participants, we have with us our esteemed speaker for this session. And the topic for this session is mentoring and mentoring and personal development of students, the role of faculty. And to speak on this topic, we have the resource person with us, Dr. Amit Sarin.
Before I pass on the stage to him, I would like to give you a brief introduction of his academic journey. Dr. Amit Sarin is Director and Professor of Physics in IKG, Punjab Technical University, Amritsar. He did his PhD from IKG, Punjab Technical University, Kapurthala. Also MSc in Honours Physics from Guru Nanak Dev University, Amritsar. His research focuses on storage, oxidation, stability of biodiesel, and other major properties of biofuel and biodiesel. He has more than 20 years of teaching and research experience. Dr. Amit Sarin has authored more than 15 books with national and international publishers like Royal Society of Chemistry, UK, and Wiley. He has published many research papers in high impact factor journals like Elsevier, Springer, ACS, and in many other conferences. He is also in the reviewer board of journals of Elsevier, Springer, RSC, and ACS. He has got the certificate of outstanding contribution in reviewing from journal Fuel of Elsevier. In 2012, he got the research project worth rupees 27 lakh under the scheme of Young Scientists from Science and Engineering Research Board, Government of India, Enterprise, New Delhi. In future also, he wants to continue with more research opportunities in the field of renewable energy. We are really honored to have you here on this platform, sir, and it is our pleasure to have you on this platform. And thank you for joining us, and thank you for accepting our invitation. Uh, the entire audience is waiting for your words of wisdom. Thank you, sir. Over to you, sir, Dr. Amit Sarin. Okay, thank you, Dr. Mukesh. Am I audible? Yeah, sir, you are audible. And thanks a lot for a nice introduction. First, let me share my screen, then I will continue. Right, sir. Is it visible, sir? Yeah, sir, it's visible. Okay. Uh, First of all, I'm thankful to the organizers of this FDP for giving me opportunity to share my thoughts on mentoring and professional development and the role of faculty. I would like to start this presentation with a quote from Dr. APJ Abdul Kalam that teaching is a very noble profession that shapes the character, caliber, and future of an individual. If the people remember me as a good teacher, that will be the biggest honor for me. That's by the Dr. APJ Abdul Kalam. तो जो मेरा कोशिश रहेगा फॉर दिस प्रेजेंटेशन, थोड़ा सा हम ये मान के चलें कि जैसे हम क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं वैसे हम इंटरेक्शन का ट्राई करेंगे एंड जैसे हम लोग चाहते थे कि हमारे जो टीचर्स हैं हमारे लिए क्या काम करें, व्हाट दे कैन डू फॉर अस, ठीक है, दैट्स नाउ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज वी आर नाउ ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल. Okay, so it's a great privilege to be a teacher, but all great privileges carry great responsibilities. So being a teacher, because I'm also teaching from the last 20 years, we are doing, as teacher, we are doing commendable work. During last 2 years of COVID, we have done even harder work. Okay, but again, there are so many things we can do for our students. Because we have to pull our students, we have to enhance their capabilities to channelize their energies in the right directions. It's our responsibility. So mentor, the title of my presentation is mentoring and professional development, role of faculty. So according to me, mentor, we all are mentors, which means manages many things, encourages students, nurture students, teaches also, because I will discuss the difference between mentor and the teacher in my future slides. We have to cover the syllabus also, offers opportunities to our students, and responds to mentees' needs. Now, who are mentees? Mentees are our students. So, basis of mentoring, it's a mutual trust, because एक ना ट्रस्ट होना चाहिए एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में. If that trust is not there, then it's very difficult to teach. एक
गैप भी होना चाहिए और एक साथ में म्यूचुअल ट्रस्ट भी होना चाहिए दैट आई कैन ट्रस्ट दिस टीचर, ये टीचर मेरा करियर बना सकता है, ठीक है, ये टीचर मेरे लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट मेरे को बनाना है एंड ही और शी कैन गाइड मी वेरी वेल. सो रेगुलर contact and conversation, desire for all round development of mentee. Professional development, it's about learning, mentoring, consultation, practice, study, improve, reflection. So this is about the professional development. It's not about ki we will just teach the syllabus, that's our primary responsibility also, but we have to carry out, we have certain objectives of mentoring. So mentoring should be enriching for both mentor and mentee. Mentoring is about learning, not teaching. Mentee is empowered to take responsibilities of his or her actions, to develop critical thinking. This is the role of mentor, that to develop the critical thinking of the students, to channelize energy in the right direction. So role played by mentor as a teacher, as a guide, as motivator, as counselor, advisor, रोल मॉडल. हम कहते हैं ना कि भी आपका रोल मॉडल कौन है, मतलब वो नॉर्मली क्या होता है कि अच्छा वो ये बोलते हैं वो स्पोर्ट्स पर्सन उस कैटेगरी में आ जाते हैं, फिल्म स्टार्स आ जाते हैं. मेरे ख्याल से हम लोगों से बढ़िया स्टूडेंट का कोई रोल मॉडल नहीं होता. बट वो रोल मॉडल हम बनेंगे कैसे, ठीक है, वो टीचर और मेंटोर में जो थिन लाइन डिफरेंस है, ठीक है, वो कैसे करना है, दैट आई विल शेयर विद डिफरेंट स्टोरीज. मेरे इट्स अ वेरी जनरल topic. In my coming slides, I will share with different topics. So that's the thin difference between a teacher and a role model, teacher and a mentor. So methods of mentoring, storytelling. बचपन से हम लोग स्टोरी सुनते आ रहे हैं, ठीक है, हम क्लास में रूटीन में टीच करते हैं, बट कोई एक टाइम होना चाहिए. अगर हमारा कुछ 5 hours 6 hours का थ्योरी लेक्चर है वीक में, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द थ्योरी लेक्चर्स, नॉट अबाउट द टोटल वर्कलोड. देयर शुड बी अ सर्टेन मोमेंट जहां पर हम कुछ स्टोरी टेलिंग, कुछ मोटिवेशनल स्टोरी टेलिंग, कुछ रेलेवेंट स्टोरीज हो, रियल लाइफ स्टोरीज हो, एंगेजमेंट ऑफ मेंटी हो, मेंटीज व्यू ऑन स्टोरी क्या हो सकता है, ठीक है. दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आप याद करिए कि बचपन में जब हम स्कूल में थे या कॉलेज में थे, यूनिवर्सिटी में पढ़े होंगे हम लोग, जो टीचर कई बार कोई मोटिवेशनल स्टोरी हमें बताते थे या कोई स्टोरी के हिसाब से कोई टॉपिक को स्टोरी से रिलेट कर दिया, तो हमें ज्यादा इंटरेस्ट हमारा क्रिएट होता था. There are on YouTube, there are many motivational speakers. Okay, क्या करते हैं वो? Basically it's about storytelling. Okay. मेरी प्रेजेंटेशन में मैंने कुछ स्टोरीज रखी हुई हैं, क्योंकि अगर मैं खुद स्टोरी टेलिंग की बात कर रहा हूं, then I should steer some stories also. A true inspirational story of honesty. If we want to teach honesty to our students, so there may be a story like this. A story of real race of Ivan and Abel. In December 2012, race held at Spain's Spanish athlete Ivan Fernandez Ananya was competing in a cross-country race. He was running second, some distance behind race leader Abel Mutai. And Abel Mutai was bronze medalist in 3,000 meter steeplechase at the London Olympics. Now, close to the finishing line, Ivan saw the Kenyan runner Abel mistakenly pull up about 10 meters before the finish, thinking he had already crossed the line. क्या हुआ कि जो एबल आगे चल रहा था, उसको 10 मीटर जो फिनिशिंग लाइन होती है, उसको लगा कि रेस खत्म हो गया, वो रुक गया वहां पर एबल. अगर इवान चाहते तो वो उसको क्रॉस कर सकते थे, वो फर्स्ट आ सकते थे. इवान क्विकली कॉट अप विद हिम बट डिड नॉट क्रॉस एबल एंड बी ए विनर. He stayed behind and using gestures guided the Abel to the line and let him cross first. Now these are the real pictures of the story. These are the real pictures. Okay. So when Ivan was asked what was the reason of doing it, he said, I didn't deserve to win it. I did what I had to do. Abel Matai was a rightful winner. He created a gap that I couldn't have closed if he hadn't made a mistake. As soon as I saw he was stopping, I knew I wasn't going to pass him. Further, he said, but even if they had told me that winning would have earned me a place in the Spanish team for the European Championship, I wouldn't have done it either. अगर मेरे को ये भी बोला जाता कि भाई आपको यूरोपियन चैंपियनशिप में सीट मिल जाएगा, मैं तब भी नहीं करता. So victory is sweetest when it's earned. Ivan replied to a further query.
My dream is that someday we can have a kind of community life. The journalist insisted again. But you could have won, Ivan replied. But what would be the merit of my victory? What would be the honor of that medal? What would my mom think of that? So Ivan preferred honesty to victory and became a world hero in 2012. तो ये स्टोरी में क्या था? ये स्टोरी हमारा एज ए टीचर हम मेंटोर कैसे बन सकते हैं कि भाई ये छोटी छोटी स्टोरीज हम अपने स्टूडेंट्स से शेयर कर सकते हैं, मे बी इन स्कूल, मे बी इन कॉलेज, मे बी इन यूनिवर्सिटीज. We all know the world is becoming more and more materialistic. Okay, but तब भी वो जो ह्यूमैनिटी है, ठीक है, it's a wonderful line. But what would be the merit of my victory? What would my mom think of that? जब ये हमारे स्टूडेंट्स के माइंड में आ जाएगा तो सब कुछ राइट डायरेक्शन हो जाएगा. हमें ही स्टूडेंट्स को गाइड करना है, हमें सिलेबस कवरेज तो करना है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, पर ये छोटी छोटी चीजें अगर हम उनसे शेयर करें, दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर देयर करियर. तो बीच में थोड़ा सा मैं अपने यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है और स्टोरी एंड स्लाइड्स, ठीक है, आई हैव मिक्स्ड इट बोथ. मेंटरिंग इज अ कोर करिकुलम ऑफ आवर यूनिवर्सिटी आल्सो. So we have divided into two parts: so expert video lectures, aptitude tests, group discussion, quiz, presentations by students, team building exercises. I will discuss about various team building exercises today also, and outdoor activities, sports, NSS, NCC, society activities, various student chapters, IST, SAC, SIR, culture club, etc. फिल्म्स, जैसे मैंने भी बोला कि फिल्म से हमें इंस्पिरेशन मिलता है, ठीक है. थोड़ी सी बात करते हैं दो फिल्मों की. तारे ज़मीं पर हम सबने आई होप सो देखा हुआ है, फिल्म उसको देखी हुई है. वो उस फिल्म में जो निकुंब आका आमिर खान ने रोल प्ले किया है, वो आप सुनिए, आप समझिए, वो एक टीचर का रोल था, मेंटर का रोल था. उस स्कूल में टीचर भी थे, बाकी टीचर भी थे, पर उस स्कूल में निकुंब भी था, जिसने ईशान को, जो उसको प्रॉब्लम था, उससे उसको दूर किया, उसको बताया कि उसका एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट क्या है. हिचकी, चैलेंज टेकन बाय अ टीचर against very odds, and how she became successful. I will share the real life stories also. Okay, this is not about the films only I will discuss about. Okay, so active listening skills. As a mentor, ask open-ended questions. As a mentee, request clarification. Be attentive, summarize, paraphrase, reflect feelings, be attuned to feelings, ask probing questions. Okay, a good teacher is also a natural mentor. Mentors are friends, philosophers, a guide to a student. A good mentor is the greatest blessings one can have in life. The task at hand on mentoring front in higher education is twofold. There is a difference between roles a mentor can play in the life of a student and the roles of a trainer possibly can play. Trainer or coach as a skill builder may not touch the essential core of a student life. A true transformation of a student from what they are to what they can be rests heavily on mentoring skills of faculty. The focus of mentoring, however, needs to show progression as the student progresses from entry to first year and to second year. It is through a good mentoring process that a student can be enthusiastic, inspired, motivated, directed towards realizing potential to achieve greater goals in life. Acting as a sublime guide, great rescuer, this is our role. जैसे अभी डॉक्टर अमित दशेरा जी, आई थिंक सो माय प्रोनाउंसिएशन इज राइट, उन्होंने भी रिसर्चर का यही बताया. ओके, a teacher who is deeply concerned about the success of students both in their life and career, not only career, in their life also, cannot afford to lose the opportunity to learn a bit about the art of mentoring. After all, neither teaching nor mentoring have been a naive job. There is a great deal one can learn and get trained in. Mentoring works well when students are made to go back to their strengths and build upon things which they really like to do. There are different cycles. Set expectation, establish foundation for successful mentoring relationship. Agree on expectation, set working agreements, work towards accomplishing learning goals, focus on closing former relationship, redefine relationship, moving forward. So mentorship is a relationship in which a more experienced or more knowledgeable person helps or guides a less experienced or less knowledgeable person. It can be other way also. Mentors have
Mentors always guides and show the right direction to the mentee and helps in finding solution to the problems. A mentor is a trusted advisor, guide, friend, or a teacher who endows knowledge and insights to the mentee. The role of a teacher as a mentor. Mentor is often considered as a faculty advisor, colleague, supporter, counselor, advisor, champion, role model, guide, friend, networker. Supporter who encourages to learn and improve, guide who helps to find life direction, educator who educates life and career lessons, role model who models and inspires by their own life, listener who pays good attention, leader who influences and leads to attain goals, friend and colleague who supports and admires, counselor who provides mental and emotional support, advisor who advises and corrects the mistakes, champion who fosters success, networker who helps in building connections to progress, problem solver who helps solving the problems. There are so many examples. This is the example of the last centuries. Savitribai Phule. Why is she called the mother of modern girls' education? Impressed by her thirst for learning, Savitribai's husband Jyoti Rao taught her to read and write. Becoming fond of teaching, Savitribai trained at Farah's education institution in Ahmednagar and in the Miss Michel's school in Pune to become the first female teacher who inspired young girls of her time to pursue education. At a time when the rights of women were almost non existent, she, along with her husband, started the first women's school at Pune. It was the year 1848, and the women's school had only 8 girls belonging to different castes. At that time, education for girls were considered a sin, and on her way to school, she was routinely harassed by orthodox men. In the same year, she also founded other schools for women. For her, education was not simply, this is again very important line, simply it's not about alphabetical learning, but rather an evolution of the mind itself. Her innovative methods of teaching slowly attracted the common people as the number of girls increased from 25 to 70. And by 1851, she was running 3 schools with around 150 female students way back in 1851. To prevent children from dropping out of a school, Savitribai offered them stipend. This is the perfect example of a mentor. Arvind Gupta ji, a teacher who makes learning a fun activity. How we all wish could learn science like अरे बड़ा boring है ये subject है ना ये engineering बड़ा boring है science boring है arts boring है. It's our responsibility to make it interesting. वो कौन से एग्जाम्पल लेके आए वो कौन से हम एक्टिविटीज लेके आए ओके सो अरविंद गुप्ता जी is such a fun teacher. He actually teaches science concepts in the process of creating toys. He creates these toys from trash, that is using waste, explaining the scientific stuff behind each one of the steps to making these toys. Les Brown, बहुत लोगों को नहीं पता होगा इनके बारे में, is one of the world's foremost motivational speakers and thought leaders on self-improvement, goal setting. However, it wasn't always that way for him. Take a born in Liberty City, Miami, on the floor of an abandoned building, he has known struggle and hardship his entire life. Academically, Les was a struggling student from the get-go. The story goes that during his school days, he was labeled educable, mentally handicapped by the academic intelligentsia of his day and placed back from 6th grade to 5th grade. To make matters worse, he had a twin brother who was exceptionally bright and gifted, and as such, Les became commonly referred to by his peer as DT, the dumb twin. One day, a teacher asked him to come up and solve a problem on the chalkboard, but Les refused and said that he couldn't. Of course, you can. The teacher responded encouragingly. Young men, come up here and solve his problem for me. But I can't, insisted Liz. I am educable, mentally handicapped. देखिए उनके माइंड में कैसे डाल दिया गया सोसाइटी ने. The rest of the class erupted in laughter. At that point, the teacher stopped out from behind his desk and looked Les straight in the eye. Don't ever say that again, he told him firmly. Someone else's opinion of you does not have to become your reality. किसी और का opinion आप नहीं हो सकते हो. आप अपना opinion खुद बनाइए. Les never forgot those words and spent the rest of his life overcoming incredible odds and pursuing his goals with passion and fervor. Time and time again, thanks to that one teacher's powerful revelation, Les has lived the phrase he's famous for all over the world: you have greatness within you. Okay, Bill Gates, इनको सब लोग जानते होंगे.
ओके, उन्होंने अपने ब्लॉग पे लिखा है, व्हेन आई फर्स्ट मेट Mrs. Caffrey, if I again pronunciation is right, she was an elegant and engaging school librarian at Seattle's View Ridge Elementary, and I was a timid fourth grader. I was desperately trying to go unnoticed because I had some big deficits like atrocious handwriting, and I was trying to hide the fact that I liked to read, something that was cool for girls but not for boys. Mrs. took me under her wing and helped make it okay for me to be a messy, nerdy boy who was reading lots of books. He credits Mrs. Caffrey for helping him escape his shell in the true spirit of exceptional teaching. First, she encouraged Gates' passion for reading by helping him explore it through the use of introspective questions, such as what he liked to read and why. Next, she would go out of her way to source books and were progressively more interesting and challenging for him. Finally, once he had read them, and she would sit down with him and ask him if he liked what he had read, and more importantly, what he had learned and why. She genuinely listened to what I had to say. Genuinely listen, again very important word, कि एज ए टीचर हमारा रोल क्या है, अपने स्टूडेंट्स को सुनना. अगर उनमें कोई कमी है, बैक बेंचर है, आंख नीचे कर रहा है, उनसे पूछिए बेटा आगे आइए, ठीक है, आप आइए, बोर्ड पे आइए, कोशिश करिए करने का. ओके. In 2006, shortly after reaching her 100th birthday, Caffrey sadly passed away, but not before Gates was able to thank her personally for the lasting impact her love and curiosity had on his life. So, mentorship is more holistic and based on fulfilling a vision. Explain everything you do. The more practical tips you can give them, the better. Tell them about their area of improvement. There is a very, again, thin difference between, अरे भाई ये तेरे में नेगेटिव चीज है. नो, डोंट टेल देम दिस इज योर नेगेटिव थिंग. टेल देम दिस इज योर एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट. Okay, you may be tempted to give only positive feedback, but it's the worst thing you can do. Okay, tell them. You need to tell them what they're doing right, but you also need to show them what they're doing wrong and how they can do it better. Ask them what questions they have. Simply but important. Just ask them what questions they have. Be encouraging. Remember to encourage them often, always. Remember how intimidating student teaching was for you, and be sure to give your student teacher a healthy dose of encouragement. Mentoring teaching as normally has great theoretical knowledge. It's not always true. Okay, I have taken it from Mentor Quiz. Okay, mentoring is great for learning how to navigate through complex social situations, better relationship. Okay, so mentorship is a two-way street. As the mentor instructs the mentee, a closer bond forms between both of them. This relationship is fundamental behind every great mentorship. If this relationship does not exist, the mentee will be less likely to follow the mentor's guidance or even trust what they have to see. A mentor guides too. A teacher teaches. This is fact. मेरा एम है यार, मैं क्लास में पढ़ाने का सिलेबस खत्म करना है, मेरे को क्रेडिट्स अपने खत्म करने हैं, ठीक है, बच्चे को पास करना है, दैट्स द रोल ऑफ टीचर. नहीं, मेंटर गाइड भी करता है आपको. Mentorships are based on a mentor's effective guidance of mentor's growth, whether professional or personal. अब बोलेंगे पर्सनल कैसे भाई, उसके करियर में उसको हम बता सकते हैं कि बेटा दिस इज योर, आपने ट्रेनिंग करना है, दीज आर योर 10 डिफरेंट पाथ्स. ओके, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, आप एमएस करना चाहते हो, दिस मे बी द योर करियर पाथ. ओके, teaching is about knowledge. Mentoring is about experience. The role of teacher is to share their knowledge through instruction, explanation. In the traditional sense, teaching involves formal lessons on a subject. Curriculum ready है, हम उसको teach कर रहे हैं, उसको interesting कैसे बनाना है वो हमें देखना है. Mentoring is about experience, more important, relational in nature. Okay, so teaching focus on how, mentoring focus on the why. Teaching focus on the how, and mentoring focuses on the why. Before you can design a bridge, a skyscraper, you have to understand how to calculate equations and engineer the right angles. That requires teaching. Okay, a mentoring focuses more on applying knowledge in practice, not just how to do something, but why it's useful. Okay, mentors impart their wisdom, practical insight, creativity, and encourage learners to express their knowledge. Okay, teachers can be mentors and mentors can be teachers. Both have an important and necessary place in education. This is fact. Okay, both have important role. We all teachers are very hardworking.
A teacher's first priority may be instruction, but they can be creative, interactive in their approach. They recognize their foster individuality, creativity, and become mentors in their own right. टीम बिल्डिंग, चलिए थोड़ी सी स्टोरी, हो सकता है सबने सुनी हो स्टोरी, मैं जो रिपीट करने जा रहा हूँ एक बार करते हैं ना। टीम बिल्डिंग का क्या मीनिंग है ना, वो हम स्टोरी सुनी हमने, स्टोरी में क्या था है ना, वो खरगोश और कछुआ भाग रहे हैं, खरगोश सो गया, ठीक है, कछुआ जीत गया, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ठीक है। नाउ अगली स्टोरीज भी बड़ी पॉपुलर हो गई है। वो रैबिट सोचता है यार मैं सो गया, मैंने तो जीत जाना था, ठीक है। वो कहता है जो दोबारा रेस लगाते हैं उसी डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। तो सेकंड स्टोरी में जो रैबिट है, खरगोश है, वो जीत जाता है। तो उसका मोरल क्या हो गया, इट्स गुड टू बी स्लो एंड स्टडी बट इट्स बेटर टू बी फास्ट एंड रिलायबल। थर्ड स्टोरी, कछुआ कहता है यार ये तो चलाकी कर गया, डेस्टिनेशन इसने अपना फिक्स कर लिया, अब मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसा डेस्टिनेशन लेके आता हूँ कि रास्ते में रिवर होगा। अब दोनों ने रेस लगाया, रास्ते में रिवर था, ठीक है। खरगोश जो रैबिट है, अपना जो टॉर्टोइस है, वो क्रॉस कर गया और रैबिट रुक गया वहीं पर, ठीक है। तो क्या हुआ, उसने अपनी जो स्ट्रेंथ थी टॉर्टोइस की, उसने उसके अकॉर्डिंग वर्कआउट किया। फर्स्ट आइडेंटिफाई योर कोर स्ट्रेंथ, देन चेंज द प्लेइंग फील्ड टू सूट योर कोर स्ट्रेंथ। उसने प्लेइंग फील्ड ही चेंज कर दिया, उसने वो जो रास्ता था, ठीक है, वो चेंज कर दिया। फोर्थ स्टोरी, उसने बोला दोनों दोस्त बन गए, बड़ा रेस हो गया, तो इकट्ठे चलते हैं ना। तो कहते हैं अच्छा चलो रिवर वाले पे चलते हैं। तो पहले खरगोश ने कछुए को अपनी पीठ पे बैठा लिया, रिवर तक पहुंच गया, रिवर तक पहुंचने पर कछुए ने खरगोश को अपनी पीठ पे बैठा लिया और रिवर क्रॉस कर गया, टीम वर्क हो गया। तो हमें अपने स्टूडेंट्स को ये बताना है कि टीम वर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप टीम में कैसे काम कर सकते हैं। इट्स गुड टू बी इंडिविजुअली एक्सीलेंट, जो फोर्थ स्टोरी था, and to have a strong core strength, but unless you are able to work in a team and harness each other's strengths, you will always perform below par, because there will always be situations at which you shall do poorly and someone else does well. तो अगर बेटर काम करना है, हमें स्टूडेंट्स को बताना पड़ेगा कि टीम वर्क कैसे करना है। टीम बिल्डिंग स्किल्स हम स्टूडेंट्स को बता सकते हैं, एटीट्यूड ऑफ कोलैबोरेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। there's always conflict, this I've taken from the L'Oreal International University, ठीक है। There may be very different team building exercises like guess the task. Okay, targeted skill means creativity, innovation. Objective, encourage participants to be creative in problem solving. Now, photos of random objects to on folded pieces of paper placed in a jar. Activity, randomly ask participants to pick a paper, stand in front of the group, let the participant illustrate the use of the item in the photo. The rest of the team is supposed to guess what image the participant is trying to demonstrate. Here, the participant should try as much as possible to be creative and offbeat in his demonstrations. Now, सीखेगा क्या वो? It prompts participants to find solutions to tasks quickly by accurately associating different processes in the workplace. The narrator challenge. Skill क्या develop करना है? Positive thinking. Encourage participants to see their past challenges as a learning experience. Activity, ask participants to be in groups of 2. Let one participant narrate to his or her partner as a past unfortunate occurrence. It can be work or non-work related experience. Ask the other participants to step forward, tell the rest of the group about the occurrence, but only dwell on the positive aspects of the whole experience. Okay, ask the participants to change roles, repeat the exercises. This activity helps them to see the break in the clouds when they handle tasks what they struggle to accomplish. Okay, in a different way. Any failure should be viewed as an opportunity to learn and improve. The presenter challenge. Encourage participants to use their imagination in coming with the suggestions before a brainstorming session. Quickly share with the group a topic that you will discuss later in the workshop. If you're doing through a workshop, ask the group participants to list 3 things they feel they will contribute to the discussion. So it will instill the habit of holding a productive meetings through active participation and prior planning. So build trust for your team members by using nostalgia. What is your favorite childhood memory? What was the best present you ever received? Who was your role model? It's just the ice breaking between the mentor and a mentee. What was the best birthday of your life? What have been the highlights of your life? Similarly, in communication classes, there are different activities like role play. One can play the role of Virat Kohli, one can be the anchor, and other way also. So team working exercises. Because this is on YouTube, I hope so everyone is able to identify this picture.
Okay, Sachin Tendulkar ji. Okay, Mr. Sachin, the great Sachin Tendulkar. Who is this? He is his mentor, not his teacher, his mentor, Ramakant ji. Thinking of a person very close to my heart who helped countless young cricketers, including me, to realize their potential through the power of support and character. Thank you for everything, Achrekar sir. Through the power of, उनके केस में sport and character. Again, a very, very beautiful word, and a character. As a mentor, our role is just not to teach. We have to build the character of our students also. So coach is job oriented, performance oriented. Mentoring focus on a person, their career, overall growth. Mentoring process, increased motivation, specific needs, friendly manner, fast track learning, improved confidence. Types of mentoring, it may be one-on-one or group mentoring in small groups. So benefits to mentor also. Mentors gain personal and professional satisfaction in helping a youth. मतलब मैं किसी को गाइड कर रहा हूँ, मेरा स्टूडेंट कहीं सेटल हो जाता है, ठीक है, तो क्या कर रहा है वो, ठीक है, हम ये बोलते हैं ना प्राउडली, मेरा स्टूडेंट इतने लाख का पैकेज ले रहा है, ये मेरा स्टूडेंट आईएएस बन गया, ठीक है, मेरा स्टूडेंट फॉरेन में कहीं सेटल है, मेरा स्टूडेंट इंडिया में कहीं बहुत अच्छी जॉब कर रहा है, ठीक है, तो हमें क्या हो रहा है, प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन. So mentor gain recognition from their peers. Mentors gain improved interpersonal skills. Mentoring focuses the mentor outside of him herself. मैं क्या कर सकता हूँ अपने स्टूडेंट के लिए और. Mentoring promotes deeper understanding of teen and societal problems. Benefits to youth, exposes youth to positive role model. Helps to focus youth on their future, on setting academic and career goals. Exposes youth to new experiences, people from diverse cultures, socioeconomic, professional backgrounds, provides youth with attention and a concerned friend, encourages emotional, social, fosters increased confidence and self-esteem. At the end, इंडियन कल्चर में ही हमारे किताबों में, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए. गुरु की महिमा का वर्णन किया है कबीर जी ने. वो कहते हैं कि जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि जब गुरु और गोविंद एक साथ खड़े मिले, तब पहले किन्हें प्रणाम करना चाहिए. गुरु ने ही गोविंद से हमारा परिचय कराया है, इसलिए गुरु का स्थान गोविंद से भी ऊंचा है. तो दैट्स द रोल ऑफ मेंटोर. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. Thank you, sir. Thank you so much. And we are getting very positive responses from the audience. They really liked your presentation. It was really, you have actually described the relationships between mentor-mentee, and you have provided us the insight about mentoring. Before I conclude, if there is any question from the audience, I would request them, they could put their questions in the chat box. If you have any question in particular related to mentoring. I think there are all positive comments about the session. Anyway, sir, thank you so much. I mean, the way you have explained with in a very practical way and putting real life examples of mentoring, it's really wonderful, sir. Your presentation was truly motivational and inspirational, and you have made this session memorable. In fact, we remained glued to our screen throughout your session. It was a wonderful session, sir. I extend my wholehearted thanks for your precious time and your words of wisdom, and your deep and intellectual way of imparting knowledge has added to the glory of this event. Your information will truly help us in our life. Thank you so much, sir, and have a great day ahead. Thank you, sir. Thank you from Thank you, Dr. entire Mukesh. Homestyling Global University. Thank you so much. Thank you. Thanks to all the organizers also. Thank you. Thanks a lot.